I hope I'm audible to you. You all can hear me. Okay. So, good evening. I'm very happy to welcome you all for this particular webinar. Early parents. When we talk about reading, we generally think in terms of teacher को करना है आणि आपला असं समज असतो की शिकण्याची प्रक्रिया जी आहे ती शाळेत कशाला पाठवते. Generally that can be the thinking, but today we are going to see something very that we have started, and you all know that the purpose of the group is to train you, to equip you a very important role in your child's education, and that too before your child goes to school. They will find this webinar very important and very useful. So त्यांच्यासाठी सुद्धा हे webinar अधिक महत्त्वाचा आहे. Why we started the detailed message telling you that, but still in order to set the ground for this, I'll tell you this. Learning, I'm not talking about teaching, I'm talking about learning. Learning starts at home. Before a child goes to school, बच्चा स्कूल में जाने से पहले शुरू होता है स्कूल. कोई सिलेबस नहीं होता, कोई एग्जाम नहीं होती, कोई यूनिट टेस्ट नहीं होता, तो भी बच्चे have a very important role to play, and that role I'm going to explain today. पहली बात मैं बेसिकली एक करियर काउंसलर भी हूँ, और and I get lot of students for career counseling after 9th, 10th, 11th, 12th. I have been counseling thousands and thousands of students until now, for over 20 years now. और ये एक do better than others. Why some students are more successful than others? I really find it very. So it is very important, my friends, to understand that there is something very important that goes. लगाते तो और भी अच्छे मार्क्स आते, अच्छा परफॉर्म करते, and they have the answers. करू शकलोस तो if you have any question, you are raising create any trouble. I have already started recording the session. I'm sure already, don't worry about that, and we will try to make it available later on. Now, very important thing, करावासा वाटत नाही, काय होतं कळत नाही, अभ्यासाला बसलो की कंटाळा येतो. Right from the first standard, somehow they find that lot of things were possible. They could have always done better. And I go back, lagan lagi, all those things, and we realize that the answer is somewhere else. And that is what exactly I want your children to be intelligent. I would ask you to make your children not only intelligent but smart also. Can we as parents make our children intelligent? The answer is yes. You will be amazed to tell you. It's very interesting to understand. It's very interesting to make our children intelligent. Now, there are two things, nature and nurture. Genetics to right from mother, and the child is born. So that is what nature has given us. उसमें तो हम 50% जेनेटिक्स है, नेचर है, जो हम बदल नहीं सकते हैं, कंडीशनली एक्सेप्ट करते हैं, मगर 50% नर्चर रहता है. नर्चर लर्निंग एक्सपीरियंसेस देते हैं, मगर वो कब देते हैं? बच्चा स्कूल में भेजने से हम सोचते हैं. कितने पहले से आप जानते हो? स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी, हमने जो आपको मैसेज भेजा है उसमें देखो, द लेटेस्ट रिसर्च ऑफ स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी सेज दैट व्हेन यू रीड टू योर चाइल्ड फ्रॉम डे 1, पैदा होते ही द चाइल्ड लर्निंग, मेंदू हा शिकायचा वय, समजून घ्या. Because this era, these last 2 decades, a child learns what exactly happens, what happens in the brain. We can see actually on the screen. भी हमारे ऑफिस में आके वो वीडियो देख लेना या मैडम से बात करना, she will explain everything. This तुम बोलोगे तो टीचर का काम है, नहीं होता है स्कूल में, ये स्कूल तक अभी तक पहुंचा नहीं. ICSE, IGCSE, IB सब हमारा काम धंधा ही वो है. But where we have seen of the latest research, अगर आप हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के चाइल्ड डेवलपमेंट सेंटर पे, येल पे जाइए, वहां चाइल्ड डेवलपमेंट सेंटर है, वहां बच्चे सीखते हैं तो न्यूरोबायोलॉजी के बाद भूलते क्यों है, प्रॉब्लम्स क्यों आते हैं, कहां से आते हैं, बड़ी डीप पढ़ाई की है, रिसर्च अंडरस्टैंड. स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी का रिसर्च है, कहता है कि बच्चों को इफ यू आर giving the opportunity, as parents, educated parents, we are supposed to do, if we give that opportunity to your child, उसके दिमाग, उसके ब्रेन में 1 ट्रिलियन न्यूरॉन्स रहते हैं, और वो इतने कनेक्शंस कर सकते हैं जितने ह्यूज कैपेसिटी रहते हैं. एवरी मिनट थाउजेंड्स ऑफ न्यूरॉन्स आर क्रिएटेड, मगर उनका एक प्रॉब्लम, उनको काट देती है, नष्ट कर देती है ना. ब्रेन प्रून्स दिस न्यूरॉन्स. इट्स यूज की लैंग्वेज सीखने का सबसे इंपॉर्टेंट पीरियड पहले 3 साल है. आपको अजीब लगेगा, शॉक्ड एंड आई वाज अमेज्ड कि दिस इज हाउ वी लर्न एक्चुअली, and we are not aware of it. First foundation होता है, that foundation will decide the whole academic potential of your child. Early reading तुम्हारे बेटे के लिए अलग है, उसके ऑब्जेक्टिव्स, और बड़ों के लिए अलग है. We need to develop a perspective, we need to develop a skill, competencies, but that's for the adults. Read it to your children because they cannot read. Early reading, पैदा होते ही, अगर पैदा होते करोगे, तुम बोलोगे इतना रिसर्च एंड सम वीडियोस, अगर हो सके तो दिखाऊंगा 1-2 वीडियोस, आपको आपकी आंखें खुल जाएगी. You will, हम उसको कैसे इंटेलिजेंट कर सकते हैं. 50% नेचर है, 50% आर रोल. बुरा मतलब ज्यादा परफॉर्म नहीं करता है, एक लोअर साइड में, हायर साइड में. एग्जैक्टली ये क्यों होती है आपको समझ में आएगा. तो तुम्हारी ये भी समझ में आएगा कि
नो कैपेसिटी टू लर्न। एक 4 साल के बच्चे के दिमाग में 1 लाख से भी ज्यादा, कि हम जब पैदा होते हैं हमारे पूरे ऑर्गन्स, सी ब्रेन इज वर्क इन प्रोग्रेस, ब्रेन तैयार होता है और हमारे आखिरी सांस तक ब्रेन की डेवलपमेंट शुरू रहती है, बाकी सब ऑर्गन्स तैयार हो, कंटिन्यूअसली वायर्स, वो न्यूरॉन्स कनेक्ट होते हैं, जैसे कुछ हम नई बात सीखते हैं, जब न्यूरॉन्स गेट कनेक्टेड, when they connect and when you repeat, then the pathways are formed, they become very strong. That is happening in your child's brain if you use fMRI and all those techniques, all the technologies are available. So it means wiring the brain, forming the synapses and the connections. ये अभी पता चला. Now ब्रेन डेवलप कैसे होता है? 2 बातों से. वन इज एक्सपीरियंस, लर्निंग एक्सपीरियंस से जितने दोगे बच्चा सीख जाएगा, इसलिए इट्स अ गुड आइडिया टू गिव चाइल्ड वेरियस. ये है कि बच्चे को, बहुत छोटे बच्चे को सर्टन सेंटीमीटर्स के आगे का दिखता नहीं है, बात गलत समझ में आते, दैट यू कीप अपार्ट, वो बाजू में रख दो. मगर बहुत छोटा है, इसका पैदा होते ही शुरू होता है. हमारे महाभारत में वो कहानी है कि अभिमन्यु माँ के पेट में था, तभी तुम्हें अजरच लगेगा, 8 महीने का बच्चा जब पेट में होता है तो वो हंसता भी है बाहर. चाइल्ड कैन सेंस लॉट ऑफ थिंग, ब्रेन वर्क इन प्रोग्रेस है. इंपॉर्टेंट है आप पढ़ना शुरू. अंडरस्टैंड रीडिंग हैज डिफरेंट ऑब्जेक्टिव्स फॉर योर चिल्ड्रन टिल फर्स्ट स्टैंडर्ड. नो, के पहले भी जाओ, आपका बच्चा 6 महीने का है, 4 महीने का है, स्टार्ट रीड ऑन दिस. और पता चलता है कि जिस बच्चों को बहुत लैंग्वेज सुनने को मिलती है, प्लीज अंडरस्टैंड, वो गूंगा भी होता है ना. इफ अ चाइल्ड इज डेफ, द चाइल्ड इज डम्ब, कैनॉट, बिकॉज यू विल बी अमेज्ड टू नो कि आपका बच्चा 1 हफ्ते का है तो भी वो 6150 से ज्यादा साउंड्स रिकॉग्नाइज कर सकता है, डिसिफर कर सकता है, माँ और बाप के दोनों के. कि हम राह देखते हैं स्कूल शुरू होने की, एंड वी मिस आउट दिस गोल्डन पीरियड, जिसको जैसे हम कहते हैं ना कि माइलस्टोन्स ऑफ डेवलपमेंट. इस सर्टन एज में बोलना लगा, चलने के लिए लगा. सो व्हाट इज वेरी इंपॉर्टेंट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ अर्ली रीडिंग, जो आज में है. रिसर्च कहता है, न्यूरोबायोलॉजी बताती है कि इवन आफ्टर 3 years, 4 years, 5 years, 7 opportunities to your child, the child's brain is malleable, neuroplastic, it still can be. How early reading can actually make our children intelligent. That's why I said, can we make our children intelligent? Our kids to be happy, we want our kids to be healthy, we want our kids to reach their potential, lose the early period. किसी प्रोफेसर के घर में जो बच्चे होते हैं, वैरायटी ऑफ लैंग्वेज, वैरायटी ऑफ वर्ड सुनने को मिलते हैं उनका. और इसी वक्त नाउ टेक अ चाइल्ड फ्रॉम, पेरेंट्स सीखे नहीं है, दे डोंट नो, फर्स्ट जनरेशन शायद स्कूल में भेजा, नाउ दे वोंट स्पीक लैंग्वेज, बच्चे को सुनने को नहीं मिलेगी, मजदूरी के ही काबिल हो जाते हैं, बिकॉज व्हेन द बेस पीरियड तो उनको सुला के रखा है. प्रॉब्लम, एक्सपोजर टू साउंड्स एंड लर्निंग एक्सपीरियंसेस इन वन लाइन लैंग्वेज. वो बोल नहीं पाएगा, मुझे पूरी बात समझ में आती है, उसके स्पीच ऑर्गन डेवलप नहीं हुए हैं. सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी, if we want our kids to reach to their children to school, let me repeat, before sending the children to school, ये जो मैं बताने जाण्याच्या आधी ऍक्च्युअली करायला, तुमचा तो पिरियड गेला असेल, इफ यू हैव मिस दैट पीरियड, स्टिल यू हैव, बच्चे को साउंड सुनने को मिलेंगे, उतनी उसकी लैंग्वेज, उसका ब्रेन वायर होगा, सिनेप्सेस फॉर्म होंगे. जैसे समझो हाईवे है, अगर हाईवे ब्रॉड है तो नैरो है तो कंजेशन हो जाएगा, प्रॉब्लम हो जाएगा. वैसे ही अगर बच्चे के साउंड, इंफॉर्मेशन का आना जाना, एक्सचेंज, कॉम्प्रिहेंशन, लैंग्वेज, वर्ड्स, मेमोरी, वोकैबुलरी सब बढ़ जाएगी. और यहीं पे होता है बच्चा इंटेलिजेंट हो गया. नहीं, इसका शायद हो सके तो वीडियो दिखाऊंगा मैं. आई हैव बीन रिसर्चिंग ऑल दिस फॉर इयर्स नाउ. शी फाउंड आउट, शी लगा कि जो बच्चे सुन नहीं सकते थे कुछ सालों बाद वो सुन सकते हैं, ऑल दोस थिंग्स, एंड शी फाउंड आउट कि जो बच्चे देर से, तो वर्ड का गैप रह गया, वोकैबुलरी का गैप रह गया, और वही गैप लिमिटेड रहेगी तो एकेडमिक परफॉर्मेंस भी लिमिटेड और लोअर रहेगा. कितना? 2 to 4%. इसका मतलब है अगर हम अपने बच्चों को, if we give language to our kids systematically in a right way through reading, listen to, then we can actually wire their brains, develop their learning potential. Now language, sounds through reading for brain development, learning potential development tool. इसीलिए मैंने शुरू में आपको बता दिया है that learning, reading has a different role. चलो फिफ्थ तक ब्रेन वायरिंग का है. 85% आपके बच्चे का ब्रेन इसी उम्र में, इफ यू डोंट गिव वाइटल न्यूट्रिएंट जैसे जिंक है, मैग्नीशियम है, आयरन, हो गया 85%, बट ठीक से डेवलप नहीं हो गया. बाद में तुम ट्रक भर के दे दो, कुछ फायदा नहीं है. इसलिए taking care of the diet and everything, but you need to give them the diet of words. Then you need to give them the sound language. That's why I always say that parents are brain builders. Parents are teachers too. You are the source. We're happy to be healthy, to become successful. COVID era में तो बड़ा चैलेंज आ गया. कौन सा चैलेंज आ गया? लैंग्वेज. मगर लॉस किसका हो गया? डैमेज किसका हो गया? डैमेज हो गया लर्नेबिलिटी लॉस. एबिलिटी रह गए, सोशलाइजेशन हो गया, बच्चों का बोलना सुनना, इंटरैक्ट करना बंद हो गया. वीडियो से 15% से ज्यादा 15 लर्निंग नहीं हुआ ऑनलाइन. ये अजीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी का रिव्यू है. डेफिसिट हो गया. कॉग्निटिव डेफिसिट मतलब ब्रेन के जो वेरियस एबिलिटीज है, लैंग्वेज थिंकिंग, आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स वगैरह जो है वो डेवलप नहीं हो गए. इसका मतलब देयर एबिलिटी टू लर्न, उसको पूछिए, दे विल टेल यू दैट दे कैन नॉट, किड्स कैन नॉट सिट एट वन प्लेस, देयर अटेंशन स्पैन हैज गॉन डाउन, लेकिन पर्टिकुलर थिंग, ये जो सब प्रॉब्लम्स आ गए
ये प्रॉब्लम से 2 साल से है। और काउंसलिंग कोर्सेज बिकॉज द टीचर्स हैव टू बिकम काउंसलर्स नाउ। हम ही नहीं, बच्चे भी बहुत सब डिसेबिलिटी था, एडीएचडी, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, दूसरे भी जो प्रॉब्लम्स थे उनको तो बहुत ही तकलीफ, डेवलपमेंट स्टैग्नेट हो गई। उसका इम्पैक्ट आगे दिखाई देगा, academic performance में दिखाई दे। Parents, read to your children, read to your children, because I believe as an educationist, if your language is good, one of the best gifts you can give to your children is good language. आयुष्यभर पूर्ण चीज होगी, give them good language। 4th का सिलेबस देखो, 7th का सिलेबस देखो, 10th का सिलेबस, टेक्स्ट इंटेंसिव प्रोड्यूस करना पड़ेगा, टेक्स्ट इंटेंसिव है। अप टू 10th दे विल बी टॉट, बाद में उनको खुद को पढ़ के, उनको समझ के प्रोड्यूस करने हैं। So they will have to hold lot of text। अगर ये होंगे, ध्यान रखो, if your language is poor, you will remain intellectual। ये मुझे नानी पालखी वाले ने बताया था, ये बात अलग है। Important become self learner। समझो मैंने एक बच्चे को एक पैसेज दिया जिसमें 100 वर्ड्स है, अगर उसको 10 थोड़ा ज्यादा समझेगा, 80 आते हैं तो बहुत ज्यादा समझेगा, और 100 वर्ड्स उनके ही उसके समझ में आ जाएगा और अपने लैंग्वेज में प्रोड्यूस कर पाएगा। प्रॉब्लम मेमो समझ में आता है, वही दिमाग में रहता है। व्हाट दे अंडरस्टैंड, व्हाट दे कॉम्प्रहेंड, दैट ओनली दे रिमेंबर। लक्ष्य गिव एन एग्जांपल ऑफ स्टूडेंट्स आईआईटी आईएम में जाते हैं, तुम्हें मालूम है कितना डिफिकल्ट एग्जाम रहता है, 15% बच्चे ड्रॉप आउट होते हैं। व्हाई? इट्स नॉट द प्रॉब्लम ऑफ देयर इंटेलिजेंस, इट्स द प्रॉब्लम ऑफ इनएडिक्वेट लैंग्वेज। सो लैंग्वेज हैज टू बी एक्सपैंडेड। आप परीक्षा के इंजन से ट्रक तो नहीं खींच पाओगे, आपको एमबीए का लर्नेबिलिटी, एबिलिटी टू लर्न डायरेक्टली डिपेंड्स अपॉन हिज लैंग्वेज एबिलिटी, और वो कभी डेवलप होनी चाहिए। रिसर्च टॉक्स अबाउट, और वो क्या होता है, लैंग्वेज सीखना क्या होता है, इसलिए पेरेंट्स विल समडे शुड, दैट्स we conduct a lot of training programs for students, for parents also। मुझे लगता है most of the parents who are here, they are educated parents। ऐसे नहीं है कि हमें कुछ मालूम नहीं है। अगर आप एक रूटीन बनाओगे, बच्चों को पढ़ के दिखाओगे, एंड डू लॉट ऑफ एक्टिविटीज, जनरल रीडिंग है, कॉग्निटिव रीडिंग, तो आपके बच्चे का दिमाग एक अलग तरीके से डेवलप कर। दैट्स व्हाई आई सेड दैट रीडिंग हैज एंटायरली डिफरेंट ऑब्जेक्टिव। कौन सा ऑब्जेक्ट? पोटेंशियल का। ये आपका ह्यूज, एंड दिस इज अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी वी हैव टू मेक देम मोर इंटेलिजेंट। हम उसको कौन सा फर्टिलाइजर क्या देते हैं, लैंग्वेज कितनी देते हैं, उतना बच्चा सेल्फ। देखो, रीडिंग, राइटिंग, लिसनिंग, स्पीकिंग, दीज आर नॉट स्टडी स्किल, दीज आर लाइफ स्किल। अगर आपके बच्चे का रीडिंग, लिसनिंग को एक दूसरे को करते हैं, प्लीज अंडरस्टैंड, लैंग्वेज लर्निंग मतलब लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइट। हमारे यहाँ थिंकिंग पढ़ाते हैं, सैडली थिंकिंग इज नॉट टॉट इन अ स्कूल, दैट्स टू बैड, एंड दैट्स ऑल द होल थिंग। बट यू कैनॉट थिंक इफ यू डोंट हैव लैंग्वेज। यू कैनॉट थिंक विदाउट वर्ड्स, राइट? ऑल नॉलेज इज मोर यू क्रिएट। और उसकी शुरुआत कहाँ से होनी चाहिए? स्कूल में जाने से नहीं, बिकॉज स्कूल में दे हैव अ सिलेबस नहीं होगा। यू हैव टू स्टार्ट द प्रोसेस इन अर्ली एज। अगर आपका बच्चा 4th 5th, इफ यू वांट to give language, that will be one of the best things you will do for your children। You are trying, but don't forget, reading has a key purpose। 30 million words का गैप रहता है। बच्चे को रोज थोड़ा पढ़ के दिखाते हो, आधा घंटा 20 मिनट, तो ऑलमोस्ट 14 लाख, 14 लाख से भी ज्यादा वर्ड्स, स्टैटिस्टिक्स है, से भी ज्यादा वर्ड्स उसने। जब वो साउंड सुनने के बाद जब लैंग्वेज सीखने जाएगा ऑफिशियली, फॉर्मली, ऑलवेज डू बेटर देन ऑल अदर किड्स। जिन्होंने सुना नहीं है, जिनका ब्रेन के न्यूरॉन्स ब्रेन ने निकाल दिए हैं, अबाउट दैट लेटर। सो डोंट डिप्राइव योर चिल्ड्रन ऑफ द पोटेंशियल दैट दे हैव। That will be doing injustice to them। Responsibility, that's what I believe in। And what happens? You have a better bonding with your children। You understand कि तुम्हारा बच्चा, but before that I said we want our children to be intelligent। Can we make them intelligent? My answer is yes। Parents, you need to know 3 things। 3 गोष्ठी, तुम्हें 3 बातें मालूम होनी चाहिए। बच्चा होता कैसे है, बढ़ता कैसे, grows, and how your child learns। ये 3 बातें मालूम होनी चाहिए। How your child learns, घर की भाषा बोलता है, जितने भी बिल्डिंग में आजू बाजू में है सब भाषा बोलता है, बिकॉज ब्रेन हैज। में आपको भेजा है, देखो कि अपने ब्रेन में ग्रे मैटर और व्हाइट मैटर रहता है। ये एक्सप्लेन करूंगा तो और भी पता चल जाएगा कि व्हेन द व्हाइट मैटर विच इज आया जाएगा, विजुअलाइज करेगा वगैरह, उसका वो व्हाइट मैटर बढ़ के जितने भी लैंग्वेज प्रोसेसिंग के सेंटर्स है ब्रेन में, वो पाथवे, जो हाईवे मैंने बोला ना आपको, जिसकी कैपेसिटी बढ़ जाती है, वो फॉर्म होता है। चाइल्ड विल लर्न वेरी क्विकली। यू गेट द पॉइंट? अदरवाइज जो बच्चे को सुनने को नहीं मिलता है, उसकी लैंग्वेज, दिस इज द रिसर्च, प्लीज अंडरस्टैंड। अब आपका बच्चा सीबीएसई में, आईसीएसई में हो, तो आपको, यू गेट द पॉइंट। नाउ योर चाइल्ड एंड लैंग्वेज फॉर कॉग्निटिव डेवलपमेंट, लर्निंग की क्षमता, पोटेंशियल की डेवलपमेंट, एंड एकेडमिक सक्सेस, एंड बुक्स, टेल स्टोरीज, सिंग सॉन्ग्स, लाफ, प्ले, वर्ड गेम्स, ड्रॉ, राइट, टॉक, व्हाट यू टॉक टू योर चाइल्ड, लिसन टू योर चाइल्ड। वे मैंने रेड में क्यों दिया है कि बच्चों को हम सुनते नहीं है, होता क्या है, कितना बोलते हो, कितना सवाल पूछते हो, बट दैट इज हाउ दे डिस्कवर द वर्ल्ड। When you listen to your child, you ask questions, ask for ideas and opinions. When you read out to the child, this is what you should do। And there is a take, you are reading with your child, ऐसे एक रूटीन बनाया। Believe me, your child will not touch the mobile। कि डैडी के साथ बैठ के पढ़ता हूँ, तुम्हारा अच्छा ठीक से सुनाई देता है क्या, ऑडियो विजुअल परसेप्शन है, सब बातें तुम्हें पहले ही पता हो जाए। तो होली में, होली फिश मार्केट के बाजू में हमारे यहाँ वसे के सब स्कूल से बच्चे भेजे जाते हैं, वी गेट टेस्टिंग,
and then we suggest the measures. Otherwise, we send them. If we find that the problem is there, then learning disability, then we refer the child to KM Nair or Sayan, and where they are formally tested, then they are certified. लैंग्वेज वक्त पे दी होती तो ये जो लर्निंग डिसेबिलिटी है, डिसलेक्सिया, डिसकैल्कुलिया, डिसग्राफिया, लिमिटेड हो जाती, इंटेंसिफाई नहीं होती। लैंग्वेज पहले से दी होती तो उतनी दिक्कत नहीं होती। नाउ डिसलेक्स नहीं जाएगी, बट उसको मैनेज किया जा सकता है। एंड इफ यू गिव लैंग्वेज अर्ली, और भी मैनेज हो जाएगा बच्चा, और भी पावरफुली, मैंने बोले ना आपको, वो पहले से करना चाहिए। और अगर बच्चे को ऐसे कुछ प्रॉब्लम है, व्हेन दे आर इन 8th and 9th standard, जब वो नीडल लगा के होता है ना, अभी ड्रिल लगाने से भी नहीं हो जाएगा। कि डेवलपमेंट बहुत के जितने अपॉर्चुनिटीज थे, व्हेन द न्यूरॉन्स वर अवेलेबल, वी डिड नथिंग। Reading out to your child, you understand whether the child has any listening, reading, eyesight, all the problem के learning style पता चलती है, वो बॉडी किनेस्थेटिक है, oral है, visual है, किस टाइप के learning binding style, every बच्चे की एक learning style होती है, वो पता चल जाती है। And then you can create a nice learning environment at home. You give this consciously, and we believe this is a part of parenting. So I said language is one of the best. That's the role I want you to play. The era of brain-based learning, जैसे मैंने कहा आपको, एक वीडियो के तुम्हें पता चल जाएगा exactly ये है क्या। This from Harvard University से रिसर्च चल रहा है, हमारे यहाँ तो शायद next 10 years के बाद आ जाएगा। That's the sad part of it. For sending them to school, raising successful reading through early childhood environment, and excuse the word acquisition. अभी टीचिंग करते थे, अभी हम लर्निंग की ओर आते हैं, लर्निंग से हम एक्विजिशन की ओर आते हैं। एनवायरनमेंट करो घर में, दे विल लर्न ऑन देयर ओन, यू डोंट हैव टू टीच। एवरी चाइल्ड हैज इनफिनाइट कैपेसिटी टू लर्न। फर्स्ट 3 years एक्सट्रीमली पावरफुल वे से वो सीख सकते हैं। रियलाइज कि कितने मल्टीप्लिकेशन में वो बच्चे की कैपेसिटी होती है, और वही हम गवा देते हैं लेट, और इससे जनरेशन का गैप समझ में आता है। I'll explain you very quickly some key. Repairing is better than repairing. Never forget. जितने जल्दी शुरू करोगे, जिसको serve and return बोलते हैं, आप बच्चे pick up the same sound when you will start speaking like that. Never babble to your child. So earlier is better because नहीं पाएगा मगर समझ पाएगा. Don't forget that. So earlier is better because easy है, brain के neurons available. Please understand. Naming objects, showing them, calling names, lot of nouns. एक 100 से 2000 तक के भी ऑब्जेक्टिव्स को आइडेंटिफाई कर सकता है। दैट इज द लेवल, उसको बढ़ाने की जरूरत है। लेट हिम हैव द चाइल्ड, गिव द चाइल्ड द लर्निंग एनवायरनमेंट। पॉजिटिव होता है कि समझो बच्चे ने कुछ सीख लिया और तुमने देखा कि एफआरएम स्क्रीन पे उसके ब्रेन में न्यूरॉन्स विल ब्रेक, गया दिमाग से। दैट विल यू कैन एक्चुअली सी हैपनिंग ऑन द स्क्रीन। रीडिंग इज बॉन्डिंग। आप प्लीज अंडरस्टैंड, लैंग्वेज इज इंफॉर्मेशन से नॉलेज निकालने के लिए काम आएगी। जितनी लैंग्वेज ज्यादा रहेगी, yes, they have good information, but you cannot say they have knowledge, because knowledge means the ability to put your information. We talk about knowledge based economy, knowledge era, language नहीं है तो काहे का knowledge। Now you have everything at the click of, तो मोबाइल दो, ये दो, कुछ फायदा, घर में लाइब्रेरी निकालो। When you did not give the language, the most everything you can access through language. Limited language, limited level को ही जाएगा। Wants to learn in the UK, Australia, New Zealand, Canada, IELTS देनी पड़ती है। अमेरिका में सीखना तो TOEFL देखेंगे, जिस लैंग्वेज में तुम्हें सीखना है वो तुम्हें कितने अच्छे आते हैं। बाद में दूसरी बात, if your language is limited, तुम्हारी ability to learn is and constructed, वो एक नया कंस्ट्रक्टिविज्म का पैराडाइम अब स्कूल एजुकेशन में चल रहा है। सक्सेसफुल होता है मेरा डायग्नोस आफ्टर टॉकिंग टू एंड टेस्टिंग एंड एडवाइजिंग काउंसलिंग थाउजेंड्स ऑफ, उनकी लैंग्वेज इनफ अच्छी नहीं होती। प्लीज अंडरस्टैंड, लर्निंग इन इंग्लिश मीडियम इज डिफरेंट एंड लर्निंग द लैंग्वेज इज डिफरेंट। लैंग्वेज पढ़ना है, ध्यान में रखो। तो ये सब मत सोचो कि इंग्लिश मीडियम में पढ़ रहा है, आईसीएसई का सिलेबस लीजिए, आईजीसीएसई का लीजिए, महाराष्ट्र बोर्ड का लीजिए, दूसरे बोर्ड का, यू विल फाइंड क्वालिटेटिव डिफरेंस, ह्यूज डिफरेंस। आईजीसीएसई में आईबी का थिंकिंग डेवलप करते हैं, हाई लेवल के कॉग्निटिव लैंग्वेज उनको दी जाती है। You remember what you understand. Expand your child's vocabulary. Learning new words means language competence is a strong indicator of future academic and professional success. Dana says, we are very much in touch with that person, and profound उन्होंने पूरे एजुकेशन का माहौल यूएस में चेंज किया है। So become a learning family. बच्चों को पढ़ के दिखाओ। अब of course you need to use age and stage appropriate material. Pick a lane. Tonight start. Things parent can do and need to do at home. So why read? ये पहले पता। अब no, sit with the child. Be the reading buddy. Reading buddy बन जाओ। Use new words, give them new sounds, modulate the voice, read to them, read aloud, read together. सोने से पहले एक पेज तो पढ़ो, उनको सवाल पूछो, ask questions, ask opinion। अभी भेज देता हूँ, आप पढ़ने की कोशिश करो, पढ़ा के दिखाने की कोशिश करो, and we will tell you how exactly it happens. Many parents for want of time, for routine, late आते वगैरह, they don't know how to do it. If you want, do you have any training program? So we are planning one session in Diwali vacation. If you are interested, you can talk to our office. Don't be a text reader. उनको क्या लगा, कैसे लगा, स्टोरी का एंड कैसे होना चाहिए। You will show them something, ask them something. Don't think the child cannot think. The child can always use age and state appropriate books. That's very, very important. We have literally thousands of books, but how to read is the technique parents need to know. Otherwise, ठीक नहीं हो जाए, बच्चे इंटरेस्ट है, मजा आ रही है, नहीं तो they have thousands of things to do, log off हो जाए। Attention span बढ़ाने की भी एक टेक्निक होती है। Read, keep mobile and TV away. Mobile and television are useless. Television is totally useless. Don't make mobile and television so they won't like to use mobile also. Tell them stories, keep story time.
ये स्टोरी टाइम है जो हमने बोला था वो give them as much English as possible. Play with language. Don't go for error. Let them listen, sound out. There is a way you can do it. Use resources such as. Now, please understand. Your child's brain is the organ of learning. मैंने बोला बच्चा सीखता means the brain is का structure change हो जाता है. When you learn 2 more languages, so bilingual होने का एक advantage है. It's a good thing that we get to. The purpose is not the language, the sounds. Sounds का diet मिलना चाहिए. English के sounds आ गए. Some apart. So repetition is very important. Correct pronunciation is listening proper and authentic environment. मतलब चलो पढ़ के दिखाता हूँ सोएगा तो जल्दी. No, that will happen when you get it. When you read out to the child will wait for you. When daddy आएंगे मम्मी आएंगे और मेरे लिए पढ़. His brain with reading. Help your children to discover themselves. Make them thinkers. Critical thinkers का problem है. Little Red Riding Hood की story है या The Engine की story है. उसमें आप बहुत creativity करिए. Fantastic ideas. For example, our reading Little Red Riding Hood की story. All girl goes wearing that red hood and then there is that bear jumps and all those things. छोटे बच्चों को इधर रख दिया. अकेले कैसे रख दी when granny is not well and she's in jungle. क्या problem है? See, they are intelligent, sympathy, empathy, critical thinking, problem solving. अभी से कर सकते हो. Using give them thinking ability also, critical, creative and all, and develop their learnability for future. So belongs to those who prepare for it today. That today is now. Tonight, आज रात से शुरू करो पढ़ना. You get the point. Extremely important. Please note that. So if you want any help, I think people अच्छे हैं. 2 मिनट वहां से. अब रुखसाना टेलर बोलते हैं उसके ऊपर है. दिगा anytime you can give a call. And they have planned a batch. You can enroll your children if you want. And before that, वो यहाँ हमारे पास आ सकते हैं. But the greater and better idea that you learn in the clinical. We can have a lot of language-related creative activities. That's a different thing. If you are interested, you can always talk to play. It's a continuous process. कुछ साल तक चलेगी. By the time your child was already superior, please understand. This is what we owe to our children. I said नहीं बन पाएगा. We have not given the child what we owe the child. We owe, I would say. Sounds of the listening, comprehension, और ये सब लेके when the child will go to school, the child will be school ready. Child will be able to मिलते हैं, and a lot of things will happen. Believe me, you can make your children very nice, competent. It need not stress your child. Toxic stress आता है, वो नहीं आना चाहिए. So give me a second. So देखते हैं 2-3 videos में